गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों। आज हम वापस अभिजीत पॉल हमारे साथ हैं। आज थर्सडे है। थर्सडे वीकली एक्सपायरी था एंड आज अभिजीत हमारे साथ कुछ आज की इनसाइट्स शेयर करेंगे। मार्केट में आगे क्या लगता है। एफओएमसी ने अपना रेट हाइक कर दिया है, सो वो जो एक अनसर्टेनिटी फैक्टर था हम सबके बीच में ऑन मंडे एंड ट्यूसडे व्हेन वी हैड मेट, so now that's also over. So I think now we should get some clarity by Abhijit ki market में as a trader हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। निफ्टी का अब ट्रेंड फॉर अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर क्या रहना चाहिए। सो वेलकम अभिजीत फॉर दिस यूट्यूब लाइव। गुड जैसा इवनिंग कि सुची। हर बार हमारे व्यूअर्स को एक बहुत अच्छा इंसाइट प्रोवाइड करते हैं एंड आई थिंक अगर उन्होंने हमारा मंडे और ट्यूसडे का यूट्यूब लाइव देखा होगा तो दे मस्ट बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट्स, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल्स हमने उन्हें दिया, एग्जैक्ट स्टॉक्स सेक्टर्स, एंड आई थिंक मार्केट बिहेव्ड एग्जैक्टली द वे व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। सो दैट्स ग्रेट। सो वेलकम। एंड आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या इंसाइट्स Yes, देंगे। let's take a look at the broader markets पहले। तो मैं quickly मेरा screen share कर लेता हूँ। There you go. Let me know if you can see my charts. यस, देख सकते हैं हम आपको। Yes. तो हम लोग जनरली इसी चार्ट पे हम लोग एनालिसिस कर रहे थे लास्ट हाँ। कपल ऑफ इंटरेक्शंस, वीकली, डेली और 75 मिनट का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम लोग। हम्म। और क्विक रिकैप कर लेंगे। वी डिस्कस कि ये एक ट्रैप हो सकता है एंड आगे जाके वी कैन गेट अ बाउंस बैक सस्टेन होना चाहिए। तो कल के क्लोज तक द वे द इंडेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, जिस तरह से कल उन्होंने बोथ दीज इंडाइसेस हैड क्लोज्ड, इट वाज शोइंग कि हाँ मे बी वो जो 17400 का एक रीटेस्ट का पॉसिबिलिटी बन सकता है। Now, it went reverse actually. Today was a day of what I would call as an outside bar. काफी सारे sectoral indices and stocks ने outside bar बनाया, जिसका मतलब higher high as well as a lower low. और जो मेजर सेल ऑफ था वो लास्ट के 1.5 hours primarily, that's the time जहाँ पे stocks like SBI fell quite sharp. तो आज के लेट आवर सेल ऑफ के बाद जो हम लोग 17400 का एक एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, क्या वो डज इट स्टिल होल्ड और नॉट? नाउ दिस सेल ऑफ today's particularly was quite sharp, and because it has many stocks and sectors, they have made an higher high and higher low. The underlying volatility of the market has kind of gone up. It was not a steady move. In fact, I would like to reiterate this कि I think we were talking on Tuesday end of the day कि अगर Wednesday को एक strong opening मिलता है और अगर intraday market dip नहीं देता है, then easily 17400 आएगा, something that I wanted to call as a short squeeze. अब वैसा कुछ हुआ नहीं है. Yesterday's move was a choppy move which made the trend look okay, but it did not give that confidence, which got reflected today, especially in the half an hour. These are not easy times actually for a short-term trader to generate consistent returns. But the way it has closed, again, very near the lowest point of the day, 17,082. My charts are suggesting that the momentum is still in favor. It's just picking up a little bit, but वो price sustain नहीं कर पाया. This move it could not sustain. Now, a 50% retracement is always something that one should look at. तो अगर हम लोग इस bounce back का बात करें, which is essentially nothing but this bounce back, तो उसका highest point, lowest point, and more or less approximately halfway is somewhere here, जहाँ पे आज हम लोग ने close दिया है. And अगर थोड़ा सा और भी फिसलता है तो 17,000 psychological round number is something that the market will look at from a short-term support point of view. मैं यहाँ पे एक wild bullish anticipation slash assumption करना चाहूँगा. That is, many a times I've noticed that market gives a sharp move either on the downside or on the upside, and immediately next day वो घुमा देता है.
स्पेशली ये आपको एक्सपायरी डेज में दिखता है, मेनली मंथली एक्सपायरी। The wild assumption anticipation from a bullish point of view is by any chance, अगर आज का हाई निकाल देता है, I think today's high for most of the stocks as well as Nifty, Bank Nifty is the most important short-term resistance. जब तक आज का हाई इंडेक्स नहीं निकाल पाता, तब तक आप एक्सपेक्ट कीजिए सेलिंग प्रेशर रहेगा। I don't see a follow through sell off unless there is some news like one way sell off. बट देख के लग रहा है कि ट्रेंड अभी तक डाउन है, मोमेंटम पिकअप कर रहा है, तो हाई चांस कि वो एक रेंज में वॉलेटाइल रहेगा। वीकली चार्ट्स को सपोर्ट मिला था प्रीवियस क्लोज टू दैट सितंबर 2022 के लोज से। सो आई एम एक्सपेक्टिंग until and unless today's high is taken out, the index is likely to stay in a volatile range, and we have to strategize ourselves accordingly. जो शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट दिखा था, it has fizzled, and now the important thing is to be seen. मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करता हूँ that after a downtrend, अगर आप एक लॉन्ग बायस क्रिएट करना चाहते हो दैट मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है, हम लोग को लॉन्ग ट्रेड्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, देन आप एक फर्स्ट जो रन अप होता है ना, द फर्स्ट मूव, उसको जाने दीजिए, डोंट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट। उसके बाद जो करेक्टिव मूव आता है और वो अगर 50-60% से ज्यादा रिट्रेस नहीं करता, तभी भी एक बुलिशनेस का एक एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन, इट स्टिल परसिस्ट्स, एंड ये तभी हो पाएगा, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ टुडेज हाई इज टेकन आउट। सो वन, द ट्रेंड इज स्टिल डाउन, the momentum is improving on the upside, the index could not hold on to the recent 2-day bounce back. Keeping in mind the weekly expiry, the market sold off very sharply in the last few hours of today's trade. We are now, in terms of stage of the market, downtrend, high volatile market. Because the momentum is improving, still improving, today's high is going to be the key level for any kind of long trades. For supports, 17K is the psychological obvious level, and उससे आगे अगर फिसलता है then the previous erstwhile close. That's the view, and इस view को basis रख के strategize, I think would be to lay low a little bit, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना चाहिए। मेक सेंस। एंड आई थिंक ये जो क्लियर लेवल्स आपने हाईलाइट किया है, 17,200 है अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक टुडेज हाई एंड यस्टरडेज हाई, and 17,000, which is a psychological level, as well as I think on the option chain, the put writers stand strong on this level. So I think our viewers and traders can actually think about some option strategy, keeping these two strikes. So I think that should make sense. Abhijit, I think the other day also on Tuesday and today you are mentioning about an outside bar, which means a जी, higher high and a higher low. Would you like to tell us the implication and what does this actually mean? How does market can have a impact this outside bar? इसका meaning क्या है to हमारे सारे users को? the outside bar, I'll correct you, is a higher high and a lower low. So Sorry, I lower have low. Yes, yes. ओपन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, एंड आपको याद होगा, आई थिंक हम लोग ने ये जो रेक्टेंगुलर टूल है, ये हम लोग ने आई थिंक मंडे के लाइव जी, क्लास में, मंडे बनाया था हमने. द Yes. आइडिया वाज दैट दिस रेंज ऑफ बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर रहा है। ये पास्ट में इट हैड एक्टेड एज अ गुड सोर्स ऑफ सपोर्ट। Yes. कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे erstwhile supports generally tend to act as current resistances, जी. which means that Bank Nifty had to take out 40K and close above 40K, जो कि आज clearly it turned out to be a breakout failure. Fail. It did take out that level, but fizzled Fail. and completely gave away big time. And इसका main कारण आपको SBI के charts में दिखेगा। जी. So Bank Nifty, coming to your outside bar question, has created an outside bar today, which means कि कल का जो कैंडलस्टिक्स का रेंज होता है हाई माइनस लो, आज का कैंडलस्टिक का जो रेंज होगा वो
कल का हाई के ऊपर जाएगा, विच ब्रिंग्स इन बुलिशनेस, और वो कल के लो के नीचे भी आ जाएगा, विच ब्रिंग्स इन बेरिशनेस। करेक्ट। अब मेनी टाइम्स नीचे पहले तोड़ता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, या फिर आज जो हम लोग ने मार्केट में देखा, हाई को पहले तोड़ा, फिर दोपहर तक लो को भी तोड़ दिया। In general, what this means is uncertainty and instability in terms of the underlying trend of the market. Neither the bulls nor the bears, and breakout failures are very common. कोई अगर एक Hmm. स्ट्रैटेजाइज करता है कि हाई के ऊपर खरीदेगा, दिन के एंड तक उसका लो भी निकल जाता है। एंड Right. सिमिलरली अगर लो के नीचे कोई बेचता है तो उसका हाई, सो इट क्रिएट्स, इट्स नॉट अ वेरी, आई पर्सनली do not prefer outside bars, because a steady market is when lower highs, lower lows, a steady downtrend like this, Correct. 3-4 दिन तक lower lows, lower high, या 3-4 candles तक higher high, higher low. That's a steady uptrend, downtrend. So outside bar is this. Now, my personal observation with outside bars, most of the time, not always, कि अगर आउटसाइड बार ने जो लो और हाई डिफाइन किया है, दिस एक्ट्स एज द इमीडिएट ट्रिगर, Okay. इमीडिएट, कल के लिए, परसों के लिए, फॉर द नेक्स्ट 2 days, 2-3 days, आउटसाइड बार का लो और आउटसाइड बार का हाई, इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर either for bullishness or bearishness. Now, Bank Nifty's chart has closed at 39,616 and the low is very close. तो right now, आज शाम को ये चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि हाई चांस है कि इसका लो निकाल देगा. And as I said, कि generally I have observed that many a times, not always, many a times, जब एक outside bar का range index निकालता है, index या stock निकालता है, from a very short term point of view, I would say 1 to 2, maybe max 3 कैंडल तक वो उसी डायरेक्शन में रहता है. नॉट ऑलवेज, बट मेनी अ टाइम्स. इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी का बात करें, द लास्ट आउटसाइड बार उसने बनाया था यहाँ पे, ये वाला था, और यहाँ पे Yes. देखिए उसका लो निकाल के यहाँ तक लेके आया और सीधा घुमा दे. तो वंस द लो और हाई ऑफ आउटसाइड बार इज टेकन आउट, उसके पहले आउटसाइड बार यहाँ था, इसका हाई निकाला और सीधा 1, 2, 3, इनफैक्ट ये भी एक आउटसाइड बार था, इसका हाई निकाला, सीधा 1, 2. सो आप नोटिस करेंगे कि जनरली आउटसाइड बार जब फॉर्म होता है और आउटसाइड बार का जो लो और हाई अगर प्राइस निकाल देता है, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्विक मूव, 1-2 bars in that way. Volatility increase होगी, and I think short term intraday traders or probably very short term traders for 1 or 2 days can probably take a quick trade if there is a possibility. Yes, yes, very quick. मतलब Very I quick. don't think so. बाजार अपने को ज्यादा वक्त देगा सोचने के लिए. I think सोचने का ज्यादा स्कोप Time नहीं period. मिलेगा. Yes, because we need to act if we want to really participate in this kind of market environment. From a short-term trader's point of view, don't sit on your position for too long. It's either on the long side or on the short side. Hmm. Makes sense. So I think market में volatility बढ़ गई है, and for that matter, for a short term trader, उनका buy side and sell side, both side stop losses is getting triggered because of this outside bar. So Correct. yes, it's challenging. So coming to sectors, Abhijit, I think we spoke about um, Bank Nifty. We spoke about auto sector also. And I was having a look with auto sector weekly charts and daily charts. I think they've, broken some important levels or on the verge of some important levels, basically, not really broken, but just at the important level. So what uh, are they giving some any early signs of reversal or a breakdown from these? No, as you can see, this is the CNX auto chart in front of Yes. us. Now, the weekly charts पे clearly आपको दिखेगा कि at the current levels, the index is back to its lows जो उसने December 22 में बनाया. Right. This Right. was the move up and this was the move down. For a decent span of time, ये sector कहीं जा नहीं रहा है. Has become a trading sector. इसके पहले it created value.
right? After that, it has not created value. If you had CNX Auto or the bunch of auto stocks in your portfolio, they have either come off or has stayed range bound. So weekly charts are at supports. Now, are we Right. looking at a breakdown from this support, or do we see any kind of a slowdown of selling and Right. maybe a short term bounce back like this? Last time उसने short term bounce back यहाँ पे दिया. For that, I take a look at my daily time frame, and I can clearly see the extent of this sell off. Momentum is a leading indication or an indicator for the upcoming trend. My momentum indicators do not suggest, my momentum indicators over here do not suggest anything phenomenal. What I can see from my Heikenhashi behavior, Heikenhashi charts behavior, is selling is slightly slowing down. Now, slowdown does not necessarily mean कि वे ऊपर की तरफ reverse करेगा. Slowdown can also mean कि it can continue on the downside. Typically, I would say the right word for a technical analyst looking at this particular chart would be deeply oversold. Now, Abhijit, can we just focus on one time frame at a time? I think our viewers are unable to see the charts clearly. So I think one time frame, single frame will help अच्छा, them ओके, look at ठीक the है. तो level. मैं क्या एक काम करता हूँ, आई विल ब्लो आउट एनी वन पर्टिकुलर चार्ट, एनी Yes. वन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, और इसी को Right. चेंज करते रहूंगा. Correct. इसी So I'll quickly revisit what we just discussed. कि CNX Auto का ये weekly chart है. This is a Hmm. weekly chart, and CNX Auto is back to its December 22 lows. So on a Hmm. weekly time frame, it's at supports. From a larger point of view, it's completely range bound. ये कहीं जा नहीं रहा है. It has become a trading sector. पहले Hmm. एक value creation हुआ था. उसके Hmm. बाद now it has gone into a range. Now, क्या ये सपोर्ट होल्ड करेगा? मतलब कैन वी एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक, या ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आएगा? जनरली व्हेन वी सी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 कंसेक्यूटिव वीक से ये गिर रहा है, जनरली शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स आर डीपली ओवरसोल्ड. आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, एक एटलीस्ट एक छोटा सा बाउंस बैक ये दे सकता है, which means I will now change this weekly chart to daily, and daily chart में आके मैं कुछ एविडेंस या रैशनल ढूंढूंगा. आई वुड लाइक टू फाइंड सम रीजन कि क्या ये बाउंस बैक देगा. नाउ सैडली सीएनएक्स ऑटो के डेली चार्ट्स में एज सच कुछ सिग्नल्स नहीं है. मोमेंटम हैज जस्ट स्टार्टेड टू इंप्रूव. माय हाइकेनाशी रीडिंग्स आर सजेस्टिंग कि ये जो सेलिंग हुआ था रिसेंटली, इसमें इट हैज स्लोड डाउन. फॉर द लास्ट 3 days इट हैज स्लोड डाउन. स्लोड डाउन इज नॉट इनफ टू बाय. स्लोड डाउन मतलब ये नहीं कि रिवर्सल देगा. इन शॉर्ट, मुझे यहाँ पे सीएनएक्स ऑटो के चार्ट्स पे शॉर्ट टर्म रिवर्सल का कोई साइन नहीं है. आई कैन नॉट सी एनी साइंस. दैट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट बाउंस बैक. ऑफ कोर्स इट कैन बाउंस बैक, बट एज आई सेड अर्लियर, अगर ये यहाँ से बाउंस बैक देता भी है ऐसे करके नेक्स्ट लेट्स से 2-3 days, आई लेट इट गो. मैं इस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहूंगा. मैं चाहूंगा कि उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आए, कंसोलिडेट फिर करे, आप और नेक्स्ट लेग होगा जैसे कि यहाँ पे बनाया था 1 2 3. मैं इस लेग में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा. So CNX Auto in a downtrend at weekly supports is showing signs of slowdown. Can give a short-term reversal. I don't have any evidence of reversal on the charts. अगर वो short term reversal देता है, उसके बाद consolidate करता है, उसके बाद जो move अगर आता है, if, then I am willing to take a look at it, which means कि it's going to take a little bit of time to shape up. वेट So I'll करें. keep an eye on the top auto names. जैसे मैं टाटा मोटर्स में देख रहा हूँ. Tata Motors is one which has improved the short-term trend and the momentum has started to राइट. improve. तो हो सकता है Tata Motors can lead. Amongst the राइट. other four-wheelers, M&M में as such कुछ खासियत नहीं है. In fact, M&M enjoys the maximum weightage in this sector, and it is because of this fall of M&M आपका CNX Auto weekly supports पे आ चुका है. So the highest weightage stock is not showing any strength. Maruti also is not showing any strength. Amongst the two-wheelers, Bajaj Auto gave a phenomenal move, this one, and now it's slowing down. It looks good. It's on the verge of giving a pretty decent big breakout. Hero Motoko, nothing there, and Eicher. These are the 6 stocks I track, nothing. So, Bajaj Auto from the two-wheelers, Tata Motors from the four-wheelers.
So that was a good insight on the auto sector. Abhijit, you just mentioned that momentum on the sell side has paused or slowed down in the auto sector. So for people who want to, short the auto index or the major stocks, when do they get a confirmation with respect to that momentum has again picked up on the sell side? Buy side, we've understood that we would let the first जी swing go, probably retrace and then pick up. We have the stocks also in mind. जी On the other See, hand, what if it hmm, breaks? yes. See, taking a position in the market depends on what is your style of trading. Matlab, um, has the CNX auto slowed down in the last three sessions? Of course, yes. Yes. Now the point is, if you expect this underlying downtrend to continue, and you're a breakout trader, then generally prima facie आप क्या करेंगे? आप जो जो recent lows उसने बनाया है, वो आज का लो हो सकता है, 3 दिन पहले का लो हो सकता है, या प्रीवियस फ्रैक्टल, ये फ्रैक्टल लो, जो फ्रैक्टल लो टूटेगा तो उसके नीचे मैं बेचूंगा। ये अगर ऐसे कोई एक्ट करता है कि इसके नीचे मैं बेचूंगा, ही इज अ ब्रेकआउट ट्रेडर, ही इज गोइंग विद द फ्लो ऑफ द मार्केट। दिस इज वन वे ऑफ सेलिंग और गोइंग शॉर्ट। द अदर वे इज आई रादर वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस बैक। जैसे यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे बेचेगा, सो ही इज अ पुल बैक ट्रेडर, you sell on a rise. Fine. Now, both of them works. Both of them at times backfire. That's why we get positive and negative trades, profit and loss. It's a mixed bag. It's part and parcel of the game. At this juncture where CNX auto stands, I will not suggest for a breakdown trade, because हम लोग क्लियरली इजीली वीकली चार्ट्स में हम लोग को दिख रहा है कि वो सपोर्ट्स पे है। Most of the stocks are fairly beaten down. So Right. breakdown I will not suggest. On a pullback possible, but pullback आने तो दीजिए, pullback अभी तक आया ही नहीं है। Right. Okay. So I think that makes sense. Uh, Abhijit, we discussed about gold last on YouTube live, Yeah. and we have in the Indian markets few stocks which moves on the basis of gold prices, something like Titan, Manappuram, and all of that. Can we discuss those stocks? I track and trade Titan, so मैं Titan Huh. पे I'll share my views. So Hmm. give me 5-6 seconds जिससे कि मैं एटलीस्ट मेरे चार्ट्स के जो ट्रिपल टाइम फ्रेम है उसको मैं एक बार देख लूं, and Sure. then I will open any one time frame and I'll work it. ठीक है. So this is the weekly chart of Titan. Hmm. There you go. This is the weekly chart of Titan, and what we see is retest of this, almost close to retest of these lows couple of time. And last though they say it is showing a bit of strength. It is reversing this move down. This move down was Right. not a one-way move down. It was broken into multiple parts. Hmm. And in this multiple parts, the important level that had come out लास्ट प्राइस एक्शन से जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आया था, वो है ये। बिकॉज यहाँ पे उसने इसने लो बनाया था और यहाँ पे उसने हाई बनाया था, विच इज क्लोज टू 2550 के आसपास। Hmm. वीकली चार्ट पे इट इज इम्प्रूविंग, अप्रोचिंग 2550, विच वी कंसिडर एज अ वीकली रेजिस्टेंस, एंड ये लो इस लेवल्स के भी आसपास है। सो 2550 एंड राउंड अबाउट इज एन इम्पोर्टेंट लेवल। अब डेली पे आते हैं। अब डेली पे आके ये हमारा जो लेवल है हम लोग ने अभी ड्रॉ किया, इसको हम लोग और थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड कर देते हैं। दिस इज द लेवल वी वर टॉकिंग। सो इंडेक्स, आई एम सॉरी, टाइटन, द स्टॉक हैज पिक्ड अप मोमेंटम, short term trend has reversed on the upside. At resistances, I will not suggest to buy, especially market में जो आज हुआ the sell off। कॉन्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक इसने कुछ डाइवर्जेंस ऐसा बनाया नहीं है, बट अगर आज का लो टूटता है, if today's low is broken tomorrow, then very likely you will get a retest of these levels from a very short term point of view, 1 to 2 days। From a slightly larger point of view, because trend improve कर चुका है, रेजिस्टेंस पे है, अभी देखना ये है कि ये कंसोलिडेट करेगा, will it actually consolidate somewhere here, or will it correct?
If it consolidates, इसका मतलब कि ये नीचे आना नहीं चाहता है, which means this breakout is coming for sure. On the other hand, if it corrects, then ये जो एक range bound trading zone में चल रहा है ये, this will continue. Yes. Abhijit, I think that was a good insight. Now, last week, Bank Nifty, I think we've already discussed, and on Tuesday we had discussed the HDFC twins. Yes, And नहीं चला. yes, so can we quickly open the HDFC twins and a few major stocks on the PSU sector, probably an SBI. Yes, HDFC Twins, because Tuesday के evening discussion के बाद, I Hmm. was expecting that Wednesday when if Nifty picks up, क्योंकि Reliance ने already एक अच्छा खासा move दे दिया था, iBank we discussed on Monday जो Tuesday it Right. delivered, Axis Bank also delivered, so I was hopeful and I was looking very closely at the HDFC Twins, especially HDFC Bank, but that didn't happen. Clearly कल के ट्रेड पे वो नीचे ही रहा, आज नीचे ही खुला. There was a lot of volatility. It has also created an outside bar. It was quite disappointing for any kind of trade. I had to close my open position uh, with a minor loss, not the loss that I had in mind, but one third of it. But yes, the trade did not work. Now, HDFC Twins or SBI or any of the top Nifty stocks जब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप अगर मंडे इवनिंग का रिकॉर्डिंग देखेंगे, वी वर एक्सपेक्टिंग बुलिशनेस, ट्यूसडे द मार्केट डिड एग्जैक्टली लाइक दैट, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वेडनेसडे ओके, बट बाय द टाइम आज हम लोग बात कर रहे हैं द मार्केट इज प्लेइंग अ डिफरेंट ट्यून. सो I am a little hesitant to looking back at HDFC Twins from a long point of view. Will I be looking to short? आज के outside bar के बाद मैं, unless I trade the outside bar, I don't trade outside bars. But आज के outside bar के बाद I would like to see where it consolidates and then I would like to take a position. But what I want to bring your attention to is the pharma, because if you take a look at the sectoral indices and take a look at CNX Pharma, आपको एक हो सकता है एक बॉटमिंग फीचर दिखे. Yes. Someone will call it left shoulder head and right shoulder and head and shoulder and all that, जो भी हो pattern whatever you name it, but हाँ, it is slightly has started to angle itself on the upside, hugely underperforming counter. So definitely not calling it from an investment point of view, but from a short term bounce back point of view, अगर ये recent कल का और आज का, कल का गेन था, आज का कंसोलिडेशन था, आज इसने स्लिप नहीं किया like most of the market did. So it showed a bit of relative strength. अगर ये sustain होता है, then maybe it will rally further on the upside. Now, if I take you to my sectoral stocks of the pharma which I track, if you notice, DVs was a bounce back, but it's actually Sun Pharma. मतलब Sun Pharma को छोड़ के बाकी कोई stocks from a trading point of view, especially in the F&O market में देख के कोई मतलब नहीं है. So I would suggest keep an eye on Sun Pharma because clearly Sun Pharma has reversed its short-term trend. Momentum काफी दिनों से धीरे-धीरे उसके support पे था, it was supporting it. So हो सकता है that Sun Pharma inches a little bit up. Psychological 1000 is the level, but difficult market. अगर market थोड़ा sustain कर लेता, at least in the last 2 days, then taking these calls would have been easier. But Sun Pharma can be an interesting counter. Nice, nice. Thank you, Abhijit. So I think what I understand broadly from the discussion is that the broader trend of the market is still down. The sentiment and the breadth and everything, the way the price action is behaving is not really bullish. In spite of, trying to be bullish a few days of the week, 1 or 2 days, but eventually the bears are coming over at all possible resistances. So yes, it is a sell on rise, and I think I really go by your thoughts that instead of being a breakout trader currently in such kind of market, it's best to play the pullback and be a pullback trader on the side of the major trend. So that makes a lot of sense. And now when you've highlighted a Sun Pharma and the Pharma Index, which Yes. normally is a contrarian index, uh, Yes. आप you उसमें know FMCG
जोड़ लीजिए. FMCG भी जोड़ ले. So I Yes, think the conviction goes stronger with that view. So I yes, think that this is something which all our viewers can take home, and do your homework. You just use stockage, take out filters using scans, and I think you'll be able to get your right stock which suits you. that's Right? right. That's right. Yes. Let's see. Thank you, Abhijit. Yes, thank you. Take care. Thank you, everybody.